Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This would be around a 45 minutes recording of today's lecture. I'm going to discuss today different functions. These functions are, um, you can see it on the screen, and they are, you are new, you haven't heard about these things before, except the last one, sine in exponential function. But these are very, very important functions. And what is required is you need to know them every time we are using these terminologies. So they shall be in your in your mind every time we are going to discuss things in signal and system. They are very, very important. These digital functions are, you can say, waveforms. They are like signals or sequence. Interchangeably, we use these words, but they are nothing just a graph. They are nothing just an equation with a certain purpose. So you must know the name of these. So the very first one is the unit impulse function, which is also called Dirac delta function. The allow we also call it delta function only, or sometimes just impulse only. It's a short name, but we will discuss the unit impulse function. We start with it. What you must know, what is a delta function? What is an impulse function? What is an impulse? Okay. What you must know every time you see this symbol delta, what shall come in your mind that it is a signal whose value is non-zero, at the zero location. When n is not equal to zero, then its value is zero. So on all other locations where n, horizontal axis n, is non-zero, then we have the value zero and accept one value, one location, that is n is equal to zero. So at time t equal to zero, its value is one, and that's why we call it unit impulse. If there is this unit, is because this is one. So if this is not one, this can be more than one. So then in that case, that's only an impulse function, but not a unit impulse function. So value is one only at one location, and that location is t equal to zero, n equal to zero. For the remaining, all the value from minus infinity to plus infinity, all the values are zero. This is the simplest function. In reality, you shall think of that this is a short duration pulse. Short duration. Short duration means that this time period for which you are giving some non-zero value is like very, very small duration of time, like in microseconds or maybe in nanoseconds. This is called the delta function. This is called the Dirac delta function or unit impulse function. It is represented by this delta. This symbol is reserved for it, and this delta of n is the impulse function. So, what I want you people to remember this all the time, all the time. I will discuss its applications in signaling system later on. But at the moment, I just tell you there's a very short duration of pulse, of, of, of a short duration. For a very short period of time, you are applying energy to a system,
and the system will respond it, and then we will discuss, we will see its response, and that response is called impulse response. So the impulse response is a very, very important topic in signal and system, and for that you must know what is an impulse function. So this is the very first function, unit impulse function. The unit impulse function delta has an amplitude of 0 at all the samples except one location, and that is n equal to 0. And at n equal to 0, its value is 1. Every digital signal can be written as a sum of impulse function using the amplitude at each sample. Now, this is something you must understand. Why we have, this is the simplest or the fundamental building block. Unit impulse is the fundamental building block. Why? Because you can write any digital signal, you can write any digital signal as a sum of different impulses, and those impulses shall be at different locations. But again, as I said, this is very important. We can have other applications of this as well as signal and system, which we will discuss later on. At the moment in this lecture, you must know what what shall come in your mind when you see this delta function. Delta function, impulse function, or unit impulse function, or whatever name is given to it, Dirac delta function. But what shall come in your mind that it's just an impulse, a short duration pulse at a particular time. So determine the following: sigma at 0. Sorry, not sigma, delta. Delta at 0, delta at 3, and delta at -2. So what should be the answer? Delta at 0, 1. Delta at 3, 0. And delta at -2, 0. Because we know the delta function definition, and the delta function definition is that its value is 1 at 0, and anywhere else its value is 0. Now the second example is to draw the signal. How to draw for delta of n? So this place is called coefficient, you know that. And the coefficient is representing the amplitude of the signal. So the amplitude is not unit, so this is not unit impulse. This is a scaled unit impulse function. And you have scaled the function by number by times 4, by 4 times. So how you will plot it? To plot it, value is at this location, its value is non-zero, and that non-zero value is 4. Everywhere else, the plot is 0. So you must know how to draw an impulse function of different types. Now draw the following signal. In order to draw -2 delta of n, now getting it, coefficient of signal is -2. Over here we have got just one non-zero value. The rest, so how you label it, x of n here and your n is here. Generally, you can limit this, do not put the limits from just like -4, but you shall realize that it is from -infinity to +infinity, complete range of the signal. Now draw these signals. How to draw delta of n -2? So if you have forgot, let me remind it that this place, this plus minus with your main variable, independent variable, is shifting. This is called time shifting. So this is the delta function.
delta of n minus 2 is a delta function shifted by a factor of 2. Similarly, this one is also a delta function shifted by a factor of 2. Now, we have discussed it in the class previously that this is shifting towards the right. You can see this is shifting to the right of the 0 of the origin, and this is shifting plus 2 is shifting to the left. This value will be at minus 2, and this value will be at plus 2. Now, the delta function whose value is 0 is non-zero at 0 location. Generally, the delta function whose value is non-zero at the 0 location generally is now non-zero at this location. Whatever at 0 is now at plus 2. Whatever at 0 was, whatever before it was at 0, whatever the value was at 0, whatever the function behavior was at 0, it is now at minus 2. So this is a shifted delta function. We call it shifted impulse function or shifted unit impulse function. This is another shifted unit impulse function by a factor of 3. And the drawing will be like this. So you can see at 3, its value is 1. Write a function to describe the signal in this figure. Now, so far, we discussed how to draw a plot from the given equation. The question is, can you write an equation for this function, for this graph? Can you write the function, the mathematical form for this graph? You students, let me show you. It would be in this form, okay? Now, this was one of the things that I said earlier in the previous slides, that you can write any signal, any digital function in the form of as a sum of impulse function, as a sum of shifted impulse function or impulse function. So this is its example. That this is given. We have certain digital function or graph whose value is at 0, its value is 1, at 1, at n equal to 1, its value is 1, at 2, and at 3, it's got 1 value, and probably in 4, we are also got at 4 value here, but we have non-zero, we have 0 values at these locations. So on the left hand side of the origin, we have got 0, on the right hand side of the origin, we have got 1, 1, 1. And later on, last time in the class, I told you that this type of function is called, what do we call it? This type of function is called unit step function. There is only one step. So, but here, our point is that how to write a unit step function in terms of delta function. Or you can say how to write any digital function as a sum of delta function. So here we are going to say that we have the first term, the delta of n, which is this one. Then we add with it and a shifted delta of at n is equal to plus 1. So at this location, we have 1, and then at n is equal to plus 2, at n is equal to plus 3, at n is equal to plus 4. So there are 4 non-zero unit impulses. 1, 2, 3, 4. These 4 and this one. So the total are 5. So in this case, I hope you understand this. This is very, very
easy. What is happening here is you are just writing this signal is the sum of unit impulse function. ओके, तो आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक इम्पल्स या डेल्टा फंक्शन को यहाँ पर ऐड करके एक कंबाइंड सिग्नल बना रहे। नेक्स्ट, in what we are practicing now, we are practicing to write a function of the सर आपने given बताया graphical signal. जी, क्या हुआ? सर अभी आपने बताया कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन में वैल्यू 1 होगी 0 पे। डेल्टा जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, जो आपने पिछले कोई 2 स्लाइड पहले बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये जो नॉन जीरो है, दीज आर शिफ्टेड डेल्टा। ठीक है, शिफ्टेड डेल्टा। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि आपने एक स्विच ऑन करना है। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि यू हैव टू टर्न ऑन द स्विच एट टाइम t इक्वल टू जीरो। व्हाट इज t इक्वल टू जीरो? दैट्स अ रेफरेंस टाइम। ठीक है, और रेफरेंस टाइम मैंने आपको सेट कर दिया कि टर्न ऑन अ स्विच एट 11 ओ क्लॉक। ठीक है, अब फॉर सम रीजन अगर आपने वो स्विच 5 मिनट लेट ऑन किया, अब इसका ये मतलब तो नहीं कि हम रेफरेंस को फिर चेंज करेंगे। ठीक है, यू टर्न ऑन द स्विच एट 11:05, तो फिर आपने का जो एक्शन है उसको आप 11 ओ क्लॉक से 5 मिनट्स लेट कहेंगे। दैट्स शिफ्टेड। ठीक है, तो हमने एक रेफरेंस सेट किया, वी ऑल एग्री एट वन लोकेशन, देन वी से दिस इज नॉट डेल्टा फंक्शन। ओके, this one is not delta function, you see, this is a shifted delta function. So you are not actually realizing, now you realize this part, that these are not impulse functions, these are shifted. By definition, impulse is a signal whose value is 1 at 0. लेकिन ये impulse नहीं है, only impulse नहीं है, shifted impulse. Intentionally, for some reason, we have delayed it or we have advanced it in time. Clear? सर Okay. So moving on, this is the same repetition of the example. We are going to practice how to write a mathematical form of this signal. You must know how to write this signal in mathematical form. Okay. So again, it's very easy. Look, this is now unit. See the magnitude as well. The magnitude of the first impulse is 4 over here. So this one is done by the first term. The second term magnitude is -2, is this one. So this term is done. Then the third one magnitude is +3, and the third one is at location of n is equal to 2. So the last one, whose magnitude is -1, there is always one present. We are not writing that one, and its location is n is equal to 3. There are four impulse shifted or non-shifted. These are four shifted pulses, and you have to write the mathematical form of x of n like this. So the signal x of n is a combination of three shifted impulses and one impulse with varying magnitudes. How we usually code it in MATLAB, जो कि आपने lab में practice करनी है. And for example, someone asks you to draw this in MATLAB, so you have to write a code like this. I'm not going to discuss it. ये सिर्फ आपकी उसके लिए है, practice के लिए है. That you just define variables in MATLAB and then you just stem and x level and y level and put the title, and you will get a figure like this. So mathematically, graphically, in MATLAB code, you can easily represent an impulse function.
सेकंड वन, जो मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया था और आज भी बता दिया, कि सिग्नल एंड सिस्टम में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट यूनिट स्टेप फंक्शन है। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन और नाम से जाहिर है कि इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक एट जीरो लोकेशन, एट दिस लोकेशन, एक स्टेप होता है. Here is just a single step, and the step you are understanding that the values jump from 0 1. Okay, so what is the definition of unit step function? This is unit step and unit impulse. These are two different terms. Unit step function is a value 1 throughout the positive region. N is equal to 0 and n greater than 0 for all the values from n is equal to 0 at this location, and the positive integers, its value is 1, and it is represented by u of n, not delta. The difference between delta function and u function, unit step function. A step function is u of n. Unit step function is u of n, and the impulse function is delta of n. Okay, remember the symbol as well, क्योंकि हम आगे इसको यूज करेंगे. This is very simple. It's u of n, and its value is 1 in this region, 0 in all the remaining region on the left. Okay, so the unit step function or unit step sequence is defined as the sequence with values as shown. The unit step function has an amplitude of 0 for n less than 0 and amplitude of 1 for all other samples. ये मैंने बताया. The signal u of minus n has the value 1 up to and include n equal to 0 and the value 0 thereafter. The signal u of minus n has the value 1 up to and including n equal to 0 and the value 0 thereafter. Basically, minus n क्या होगा आपको पहले पढ़ाया गया है in class, that this is the mirrored of the original signal. तो यहाँ पर आ जाएगा in example. Let's see. Determine the values of the following. The first one is u of minus 1. U of minus 1 is 0. This is location. U of minus 1. Value is 0. U of 0 is 1 and u of 1 is 1. Similarly, you can ask u of 2, u of 3. So all the values here are given, are defined by the unit step function, and all these values are 0 as per the definition, by definition of the unit step function. X of n, 3 u of n. अगर इसको प्लॉट करना हो तो how you will plot it? You will plot it like this. So the magnitude is scaled up by unit 3, and the rest it is a unit step function, and the step has to be taken at 0. So 3u of n is plotted like this. Easy. The next one is shifted unit step function. So far you know that we shift the signal to the right and to the left. And you know also that n minus 2 is shifting to the right. So here, in a shifted unit step function, we are going to take the step at some location other than 0. Like for example, in this case, the step is taken at plus 2. N is equal to plus 2. So this signal u of n minus 2 will be plotted like this, and this signal u of n plus 2 will be plotted like this. What is it? Here, the step is taken in advance. Here, the step is taken
delay. Here is the example of what we discussed, what I left के अगर आपके पास u of n के बजाय u of minus n हो तो u of minus n is the mirror of the unit step function. Previously, we were going from left to right. Now we are going from right to left. If you are going from right to left, you are taking the steps at the same location n equal to 0. But what you do is you are going, you have 1 for negative value, जो कि previously कहाँ पर था 1 पे था. तो माइनस या मिरर सिग्नल क्या होंगे एग्जैक्टली 0 के अक्रॉस अराउंड 0 about 0 and about this axis horizontally आपके पास not vertically. ओके मिरर सिग्नल वर्टिकली भी हो सकता है बट इन दिस केस हमारे पास यार्डस्टिक क्या है हम हॉरिजॉन्टली इस वर्टिकल एक्सिस के दूसरी तरफ मिरर बनाएंगे ठीक है u of n minus 3 how to plot it so we'll start the step at plus 3 it will be like this now see this one u of 3 minus n. Now it is not following the standard form. मैं दोबारा वापस जाता हूँ पिछली स्लाइड पे. This is n minus 3. n minus 3 is different than 3 minus n. Remember that, okay? अब आपने दो स्टेप में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है. दो स्टेप से मुराद ये है कि आपने पहले u of minus n लेना है और u of minus n को फिर आपने शिफ्ट करना है by 3, by factor of 3. ठीक? तो आपके पास ग्राफ क्या बनेगा आपके पास अगर मैं u ऑफ माइनस एन प्लॉट करूंगा वो ऐसे आएगा अभी बता दिया थोड़ी देर पहले ऐसे ही आएगा दिस इज u ऑफ माइनस एन इज इट u ऑफ माइनस एन इतना बड़ा मुश्किल होता है u ऑफ माइनस एन ऑफ माइनस एन की साथ शिफ्टिंग प्लस 3 की है इसकी है प्लस 3 दिस 3 minus n can be written as minus n plus 3. प्लस 3 की शिफ्टिंग कहाँ पर होती है सॉरी ये इस तरह नहीं होगा ये माइनस n माइनस 3 होगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस तरह एक ब्रैकेट होता है तो वेन एवर जब आप इसको तो इसकी शिफ्टिंग जो है ना आ, यानी शिफ्टिंग आपको जो प्लस 3 वाला होगा प्लस 3 वाला वो तो माइनस 3 पे जाएगा तो ये बेसिकली यहाँ पर आएगा लेकिन ये वाला प्लस 3 पे जाएगा इसलिए आपने इसको इस तरह कंसिडर करना है ओके आपने इसको जो एक माइनस है माइनस एन का वो आपने इसके साथ ब्रैकेट के हिसाब से दोनों के साथ कंसिडर करना है इस बुक में आपको मजीद आगे भी आएगा मैं बताऊंगा ठीक है तो अब आपका जो माइनस एन है वो किस तरह जाएगा प्लस 3 पे आ जाएगा एन माइनस 3 इज हियर अब नेट रिजल्ट आपका ये वाला इम्पल्स हो जाएगा स्टेप यूनिट स्टेप हो जाएगा आगे भी प्रैक्टिस है एक्स अगर हमने दो यूनिट स्टेप फंक्शन को आपस में ड्रॉ करना हो कंबाइनली अब हम क्या करेंगे हम अलग अलग ड्रॉ करके फिर इनको एड अप करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं ठीक है फर्स्ट सबसे पहले आपके पास ये क्या है u ऑफ n है नजर आ रहा है ये आपके पास बहुत छोटा है आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको प्लॉट करूँ
like this unit step function, you know that now. ये क्या है? ये ट्वाइस मैग्नीट्यूड के साथ n इक्वल टू +2 पर यूनिट स्टेप फंक्शन दूसरा। ठीक है, तो दोनों को मैंने अलग अलग प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को आपस में पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करना है। दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे तो यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक, नॉट डू एनी mistake. For example, we are starting at 0, and at 0 the value of this is 0 and the value of this is 1, so the net is 1. Here the value is 1. At one location 1, the value of this is 0 again, and the value of this is 1, so this value is 1 again. At location 2, at this location 2, its value is, the first one value is 1, the second one value is 2, and the net is 3. So this value is 3. And similarly, this is also 3, and so on and so forth. The rest, all the values are 3. So the signal will be, there will be two steps now in this result. One here, that's a unit step, and then at this location there is a 2 unit step. So this would be the net result. बस आपने क्या करना है, पहले को अलग ड्रॉ करना है, दूसरे को अलग ड्रॉ करना है, दोनों को आपस में ऐड करना है। ठीक है, सिग्नल्स में ये चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। इसको मैंने करना है तो सब्ट्रैक्शन करनी है। यू ऑफ एन प्लॉट किया पहले ग्राफ में, दूसरे ग्राफ में यू ऑफ n-3 प्लॉट किया। अब मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो सब्ट्रैक्शन जो मैंने क्या करनी है, पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है पॉइंट बाय पॉइंट। एक्स वैल्यू इज 1, हियर एक्स वैल्यू इज 0, तो ये यहाँ पर, यहाँ तक इसकी वैल्यू 1 होगी। उसके बाद सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, और सब्ट्रैक्शन से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको बियॉन्ड दिस पॉइंट आपको कुछ नहीं मिलेगा, फ्रॉम 3 अनवर्ड्स कुछ नहीं मिलेगा, लेस देन 0 भी कुछ नहीं होगा। So there will be just this, these three signals and the net and the resultant. A digital signal is described as x of n is equal to 4 u of n minus u of n minus 1. Write the function that describe x of n minus 3. I repeat the example. A digital signal is described as x of n, which is equal to 4 u of n minus u of n minus 1. Write the function that describe x of n minus 3. So substituting n is equal to n minus 3, x of n minus 3, substituting this n as n minus 3, because we are asked to write this. So how you write this? यहाँ पर n है, वहां पर n minus 3 लिख लो। यहाँ पर n है, तो ये 4 into u of n minus 3 हो जाएगा। इस n की जगह पे n minus 3 लिख दो, तो n minus 3 minus 1 will be n minus 4. आपको समझ आ गई? दिस इज द आंसर। अ डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड, ये गिवन है, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि कोई भी सिग्नल है और वो ये है, उसकी वैल्यू इस तरह है। अब आपने इसी सिग्नल से x of n minus 3 बनाना है, तो देयर इज ओनली वन वे और इजी, रिप्लेस n by n minus 3। ठीक है, n minus 3 क्या है? अ शिफ्टिंग बाय अ फैक्टर ऑफ 3, किस साइड पे? +3 की तरफ। +3 क्या होता है? डिलेड सिग्नल। तो बेसिकली आपके पास ये सिग्नल गिवन था और आपने उसका डिलेड वर्जन बना दिया। मैटलैब कोड इसका भी, यूनिट स्टेप फंक्शन का भी इसी तरह ही है, जस्ट टू शो यू। बाकी ये स्टेम का कीवर्ड है, इससे ये बन जाता है। ठीक है,
अगर आपने यू के 1 और 0 पर ऑल द वैल्यूज ऑफ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये बनाना है, यू कैन प्लॉट इट इन. What is the connection between impulse and unit step function? Step and impulse के दरमियान में क्या कनेक्शन है? So the step function may be expressed as the sum of impulse function. हम step function से impulse function, sorry, impulse function से step function बना सकते हैं. ये हमने कर लिया ना अभी. Impulse function हमने जो पहला एग्जांपल किया था उसमें हमने 3 impulses या 5 impulses को यूनिट के फॉर्म में बना दिया था. आई कैन शो यू इफ यू वांट टू सी. ये वाला ठीक है ना, ये आपके पास एक्सेस n है, इसका हमने ये मैथमेटिक्स लिख दिया, इसको प्लॉट किया, और आपको मैंने यहाँ पर भी बता दिया था कि दिस इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, लेकिन ये हमने इम्पल्स के टर्म्स में लिखा है. तो गोइंग बैक, कोई भी यूनिट स्टेप फंक्शन is equal to the impulse at that location plus shifted impulses till infinity. ठीक है. अब ये हमने जनरली मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में किस तरह लिखना है? इट इज द समेशन ऑफ ऑल m is equal to 0 up to infinity where n minus m. So put m is equal to 0, you will get delta of n. Put m is equal to 1, you will get delta of n minus 1, which is this one. Put m is equal to 3, you will get delta of n minus, sorry, m is equal to 2, you will get delta of n minus 2, which is this one, and so on and so forth. So any unit function is a summation of m is equal to 0 up to infinity, delta of n minus n. Yeah, just to remember it. बाकी समझ तो आपको आ गई है. अब आपको बेसिकली लॉजिक भी हर वक्त याद रहनी चाहिए. प्रॉपर्टीज है कि यूनिट स्टेप फंक्शन इक्वल टू सम ऑफ डेल्टा फंक्शन प्लस all the delta function just before that n minus 1, n minus 2, n minus 1. ठीक है. बेसिकली बिफोर से मुराद यहाँ पर एडवांसमेंट है, सॉरी डिलेड है. Similarly, impulse function may be expressed as the difference of two step functions. Impulse function को हम, यानी ये जो impulse function है, इसको हम दो यूनिट स्टेप फंक्शन से बना सकते हैं. एक स्टेप आपने लिया हुआ था, उस स्टेप को आपने वापस कर दिया, माइनस डाउन कर दिया, तो ये impulse बन गया. तो गोइंग, दिस इज impulse, to take a step. अब इस स्टेप को आपने कैसे रिवर्स करना है? एट वन लोकेशन लेटर आप ये स्टेप डाउन कर लोगे. तो स्टेप अप, स्टेप डाउन is what we call it delta function. Short duration pulse. ठीक है. तो आपको ये समझ आ गई होगी. इन अदर वर्ड्स हमने क्या किया, n माइनस 1 को यानी एक स्टेप को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो वो पॉइंट बाय पॉइंट जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 - 1 विल ऑलवेज बी 0. ये सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगे बियॉन्ड दिस वन इम्पल्स, और ये इम्पल्स है फ्रॉम 0 to 1. डेल्टा फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन फ्रॉम 0 to 1. यानी बेसिकली हमने वन को बेसिकली हमने ये प्लॉट इस तरह नहीं होगा, प्लॉट इसी तरह ही होगा, लेकिन क्योंकि आइडियली दिस इज नॉट पॉसिबल, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन लेंगे. आइडियली यू कैन नॉट गो अप एंड कम डाउन एट द सेम टाइम. ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. प्रैक्टिकली डेफिनेटली देयर इज सम टाइम पीरियड, इट विल टेक सम फ्रैक्शन ऑफ टाइम जिसमें आप अप जाओगे और फिर डाउन आओगे. बट व्हाट व्हेन वी राइट इट लाइक दिस, तो आपने n इज इक्वल टू u of n minus 1 at one location basically down हो गया. अगर ये पॉइंट समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ.
कैन आई रिपीट दिस? कैन आई रिपीट दिस इक्वेशन? और समझ आ गई आपको? Let me ask. ओके, चलो फिर क्लास में बाद में इसको मैं दोबारा बता दूंगा। हियर इज अ नीड एट द मोमेंट, मैं आगे जाता हूँ। कनेक्शन बिटवीन इम्पल्स एंड स्टेप फंक्शन। राइट अ फंक्शन टू डिस्क्राइब द सिग्नल इन द फिगर। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि ये फंक्शन गिवन है, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा फंक्शन, या राइट इट इन टर्म्स ऑफ यू फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, दोनों पॉसिबल है। दिस इज गिवन, दिस ग्राफ इज गिवन, you are asked write it in terms of delta function, you can do that. You are asked to write it in terms of step function, you can do that. तो पहले हम डेल्टा को देखते हैं। डेल्टा क्या है? एक एक पॉइंट को कंसिडर करके आप कर रहे हो, बहुत आसान है। ठीक है, एट जीरो द वैल्यू इज 2, so you write it 2 delta of n. At 1, 1 is n minus 1. At 1, the value is 2, so you write 2 delta of n minus 1. At location 2, the value is minus 4, to write minus 4 delta of n minus 2. Location is delta of n minus 2. At 3, the value is minus 4 delta of n minus 2. At 4, the value is minus 4 delta of n minus 4. तो आपके पास 5 इम्पल्स थे और आपने एक एक करके इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिए। अब जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो इस तरह नहीं होगा, वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। यहाँ पर आपने पहला पार्ट लिख दिया लाइक दिस, अ यूनिट स्टेप फंक्शन विद मैग्नीट्यूड 2 u of n। अब इसकी 2 को कैंसल आउट करने के लिए इस पॉइंट के बाद आपने इसको नेगेटिव पे लेके आना है। ठीक है, तो आप दूसरा यूनिट इम्पल्स माइनस करेंगे इसमें से, और उसकी मैग्नीट्यूड ये वाला डिफरेंस होना चाहिए। दिस डिफरेंस इज -4 एंड दैट +2, so this difference, the total difference is 6। इसलिए आप किस मैग्नीट्यूड का इम्पल्स अप्लाई करेंगे? सॉरी, नॉट इम्पल्स, स्टेप। यूनिट स्टेप आप कितने मैग्नीट्यूड का लेंगे? -6 का, यानी +2 से आपने -4 पे लेके आना है। कितना? -6 का। किस लोकेशन पे? तो आइडेंटिफाई द लोकेशन, द लोकेशन इट इज n-2। अब ये होगा कि ये जो आगे जितनी भी है, इसका जो +2 है वो कैंसल आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग -4 जो है वो इसमें रह जाएगा। The next one is the unit ramp function. Ramp is like a slope। ठीक है, शायद आपको पहले से आइडिया हो, बट दिस इज आर, आर फंक्शन। ramp ramp function is r of n, its value is n। ठीक है, its value is n। इसके अगर आपने एक्स वाई में इक्वेशन लिखना हो, तो if this is x and this is y, we are saying this graph is equal to y is equal to x। तो y is equal to x, तो ये n है, तो y is equal to n। ठीक है, आपको पहले से पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y is equal to mx plus 1 होती है, लेकिन अगर mx plus c होती है, लेकिन अगर c आपके पास 0 हो तो ये ऑरिजिन पे टच करता है, और अगर स्लोप आपके पास 1 हो तो इक्वेशन बन जाता है y is equal to x। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद सर्टेन एंगल 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री तब होगा जब इसके पास इसका स्लोप क्या होगा? 1 होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन है, और इसको हमने क्या किया? x हमारे पास n है, तो x वैल्यू इज n on the in the positive region and its value is 0 in the negative region।
यहाँ पर क्लैरिटी आ गई आप लोगों को? दिस इज नथिंग, मैथमेटिक्स का स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन प्लस सी प्लस सी। सी इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट से मुराद ये होता है कि वो ओरिजिन पे ही क्रॉसिंग करेगा y एक्सिस को। तो यहाँ से ओरिजिन जीरो इस पॉइंट पे क्रॉसिंग होगी, और बाकी आपके पास स्लोप अगर वन है तो 45 डिग्री इसका स्लोप होगा। दिस in signal and system we call ramp function, unit ramp function, and ramp function is given by r of n। ठीक है, तो y is equal to x, y is equal to x is r of n is equal to n because x is n। तो इसकी वैल्यू n है for all the values in the positive region of n, और इसकी वैल्यू 0 है in the on the left hand, on the left hand। ठीक है, power function take the form x of n a alpha beta n। In the special case where alpha is equal to e, such functions are called exponential function। इससे आप थोड़े से पहले से वाकिफ हो। Beta is positive, growing exponential. When beta is negative, it's a decaying exponential। Alpha is negative, the signal samples alternate positive and negative। The value of a is determined the magnitude amplitude value of the function when n is equal to 0। तो ये जो पावर फंक्शन है ये आपको पहले से पता है। मैं आपको बाकी भी इसके एग्जांपल्स हैं ये रहते, ये आपको क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था मैंने। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आपने कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, तो अगर पावर फंक्शन में ये वाला अल्फा ई हो जाए, ये वाला पॉइंट याद रखें क्योंकि हम ज्यादातर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एक्सपोनेंशियल में द बेस इज द एक्सपोनेंट e, and the base is e, and the things are dependent, यानी आपका independent variable power में चला जाता है, n is in the power। ठीक है, तो e raised to the power n। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में, क्योंकि हम सिग्नल को आगे फिर यूलर आइडेंटिटी भी आपको पहले बताई हुई है, तो हम इसी को यूज करेंगे। तो ये वाला थोड़ा सा में आपने प्लॉट कैसे करना है, पुट द वैल्यूज ऑफ n देयर, और आपके पास प्लॉट आ जाता है। देखिए ये मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की वैल्यू भी आपको पहले से पता है, 2.71828। ठीक है, याद भी ना भी हो तो कैलकुलेटर में अवेलेबल होती है। और बाकी इसको हम heavily यूज करते हैं। I told you that why we are mostly interested in this function because in real life we have sine and cosine signals and those can be combined into one exponential। और फिर इसका एडवांटेज ये होता है कि इसकी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो वो होता है, मतलब आसान मैं नहीं कहूँगा, इट्स नॉट कि आसान और मुश्किल का कॉन्सेप्ट। द एप्लीकेशन इज दैट इट्स द सेम फंक्शन। ठीक है, तो आपको चेंज नहीं करना पड़ता। यू आर डूइंग टू एनालाइज समथिंग और आप कहते हैं कि मुझे पता है कि आंसर ये आएगा। Again, I'll get the same answer। Yeah, like integration of exponential something। Okay, so ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आप इसको आसानी से कर सको, बट द थिंग इज कि आपको पहले से आइडिया है that the output will be of the same type as the input, or the answer will be of the same form as the question। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन वो हम डिस्कस करेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। एट द मोमेंट जो है यहाँ पर ये कुछ चीजें आ गई। इट इज जस्ट यूलर आइडेंटिटी प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड, और फिर आगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का कॉन्सेप्ट भी आ गया दैट वी आर यूजिंग आयोटा जे, और उसके बाद फेज शिफ्ट और ओमेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से मैंने दी हुई है। बट स्टिल हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं क्योंकि लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर रिकॉर्डिंग एंड फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर हम एक क्वेश्चन आंसर